Hello students, today we will discuss an important topic of thermodynamics, that is work done in different thermodynamic process. This is a very important topic and many questions are set up from this topic. So let's start with the discussing of the main thermodynamic processes. You have learned about four thermodynamic processes in this chapter. First is isothermal process, isochoric process, isobaric process, and adiabatic process. Isothermal process is that in which temperature remains constant, that is delta T is equal to 0. Isochoric is that process in which volume remains constant, that is delta V is equal to 0. Isobaric means pressure remains constant, delta P is equal to 0. And adiabatic means there is no heat exchange between the system and the surrounding, that is Q is equal to 0. Adiabatic, for all these processes certain keywords are used in the numericals. Like for adiabatic process they may give insulated vessel. Insulated vessel means there will be no heat flow between the system and the surrounding. क्लियर. आइसोबैरिक के लिए दे सकते हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ, दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट. Clear. Isobaric they will give at constant volume or in a closed vessel. And for isothermal they will give the term isothermal, means at constant temperature the process is taking place. So these are the different processes. Now we will discuss one by one what is the work done in different types of process. Now the basic equation that we use is, see, we generally when we discuss the thermodynamics we take a cylinder fitted with a piston. There is a piston here and there is a gas inside this cylinder. Clear. Now suppose the area of the piston is A and suppose the pressure P external and this is the P gas. Now suppose P external is less than P gas. P external हमने कम कर दिया, बाहर का pressure reduce किया. As soon as you reduce the pressure this piston will move up. Suppose it has moved at this position, यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया. So what is the change in length? L. Suppose it moves through a distance L. Now work is defined as force into distance. Force is pressure into area. Clear? Into L. So we can be write pressure into A into L. Area of cross section into length is volume change. So it has moved through this volume delta V. Clear. Now whenever we have to calculate the work done we will use this basic formula, we will integrate it and we can calculate the work done in any process. So the basic formula for us is W is equal to minus P delta V. We use minus sign here to satisfy the sign conventions. That means work done on the system is taken as positive, work done by the system is taken as negative. So these are three things you must know. Work is equal to minus P delta V. Here P is P external. Work done on system is positive, work done by system is negative. So we will start with first process, that is we will discuss isothermal afterwards. First we will start with isochoric process. And we will use the first law of thermodynamics here. Isochoric process. Isochoric process means delta V will be equal to 0. If delta V is equal to 0, the work done is minus P external delta V and delta V is 0. तो work done भी क्या हो गया? Work done is also 0. Clear? If work done is 0 and we use the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W, work done 0 हो गया, तो delta U will be equal to Q. Means whatever heat you are supplying to a system, that will increase the internal energy of the system. तुमने किसी system में 50 joule of heat add की, तो internal energy will increase by 50 joule. If you are removing 50 joule of heat, the internal energy will decrease by 50 joule. So, and if you want to draw the graph for this pressure versus volume, what type of graph would you get? Volume is constant. Suppose it is going from state 1 to state 2. ठीक है.
तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट। ये डायरेक्शन शो करती है कि प्रेशर क्या हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड वी नो दैट वर्क इज द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पर यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं आएगा बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे मिलता है, ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया कवर करेगा, एरिया अंडर दिस will be defined as work done, but it is a straight line here, so work done will be 0. Clear? So for isochoric process, work done is equal to 0. Now coming to isothermal process, we will discuss two cases here, reversible isothermal process and irreversible isothermal process. रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स डेल्टा टी तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, मीन्स डेल्टा टी विल बी जीरो इन बोथ ऑफ दिस, बट व्हाट इज द डिफरेंस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, बहुत स्लोली कैरी आउट करते हैं, एंड हियर यू कैन टेक पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस. That is the main conclusion from here. Reversible force means driving force or opposing force can be taken as equal. There is a minute difference, and P external can be taken equal to P gas. But in case of irreversible process, P external will never be equal to P gas. You cannot take because there is a large difference between P external and P gas, and this process is very fast. It is carried out in a finite number of steps. Clear? So let's start with the work is equal to minus P dV. dV is a small change in volume, and we will integrate the small work done to get the total work done. Now work will be equal to, this is P external. We can write P external as P internal, P gas dV, and for P gas we can use nRT upon V. PV is equal to nRT. So we can use P is equal to nRT upon V dV. These are constant, temperature constant है isothermal process में, R constant, number of moles constant, minus nRT dV upon V. Put the limits V1 to V2. Suppose उसका expansion हो रहा है V1 से V2. So can we write here minus nRT integration of dV upon V will be natural log of V2 upon V1. Clear? If you convert this natural log into log base 10, you have to multiply it by 2.303. So ये हो जाएगा 2.303 nRT log V2 upon V1. Now we know that at constant temperature from Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. Clear? So we can write V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. So here you will get minus 2.303 nRT log, so this was V2 by V1 log P1 by P2. So these are the two formulas that you can use for the work done in reversible process. Clear? These are the two formulas. It is V2 by V1 and it is P1 by P2. Minus 2.303 nRT log V2 by V1. So for reversible isothermal process, this will be the formula for the work done. Now let us calculate for irreversible process. Irreversible process में हम P external को constant लेते हैं against a constant external pressure because it is fast process. देखो suppose तुम्हारे पास एक गैस है, you have a gas here, ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम में, मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग, दैट मीन्स पी एक्सटर्नल क्या है, पी गैस के बराबर है एट दिस पोजिशन व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग. नाउ सपोज यू रिड्यूस दिस पी एक्सटर्नल, तुमने 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो सडनली दिस पिस्टन विल मूव अप. कब तक मूव करेगा, जब तक बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता. दैट मीन्स इट इज़ मूविंग अगेंस्ट दिस प्रेशर. सो पी एक्सटर्नल कौन सा होगा, 1 एटमॉस्फेयर. क्लियर? तो पी एक्सटर्नल हम कांस्टेंट लेंगे क्योंकि इसी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट गैस मूव कर रही है. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और यू कैन राइट माइनस पी एक्सटर्नल V2 by
V1. So this will be the formula for irreversible isothermal process. Clear? Now let us check the graph for isothermal reversible and irreversible process. Suppose this is pressure volume graph. For reversible process you will get this type of graph. Clear? You will get this type of graph for a reversible process. So what is the work done, work obtained here? Work obtained कितना हो जाएगा? The area under the PV graph. तो ये जो भी area होगा, this will be equal to the work done. Clear? Now if you are drawing the, this is for reversible process. If you are drawing for irreversible process, ठीक है, प्रेशर इतना था और डिक्रीज होके इतना हो गया, बट व्हाट विल बी द वर्क डन हियर? सी वर्क डन विल बी इक्वल टू, देखो कहाँ से मूव किया, ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया जब 1 एटमॉस्फेयर, सपोज दिस इज 16 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, जब 1 एटमॉस्फेयर हुआ तब गैस मूव की, दैट मीन्स व्हाट विल बी द वर्क डन, यहाँ से प्रेशर लेंगे 1 एटमॉस्फेयर and this will be the work done for the irreversible process. So work done in reversible process is more than work done in irreversible process during expansion. ठीक है, समझ में आ गया? ये 16 एटमॉस्फेयर पे था बट इट वॉज नॉट मूविंग एट दैट टाइम. मूव कब किया? जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया? 1 एटमॉस्फेयर. मतलब जब इतना प्रेशर हो गया तब गैस, तब पिस्टन मूव हुआ. मीन्स इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 अगेंस्ट दिस प्रेशर. तो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन. So work done in reversible process is greater than work done in irreversible process. These are the graphs for reversible and irreversible process. Now coming to the isobaric process. Isobaric process में क्या होगा? Isobaric process the pressure will be constant, that is delta P will be equal to 0. तो external constant external pressure होगा, means whatever formula we derive for irreversible isothermal process the same formula we will get. Pressure constant है तो you can use W is equal to minus P delta V. क्लियर? प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस पी V2 माइनस V1. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज इन टर्म्स ऑफ R इफ यू वांट टू राइट माइनस एन आर डेल्टा टी, और इट विल बी इक्वल टू माइनस एन आर T2 माइनस T1. क्लियर? PV2 माइनस PV1, PV2 क्या हो जाएगा? NRT2 and PV1 will be NRT1. So you can use this formula in place of P minus P delta V. You can also use minus NRT2 minus T1. If temperature is given, you will use this formula. If pressure volume is given, you will use this formula. So what type of graph you will get for this? This is pressure versus volume. प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट एंड सपोज वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 to V2, इधर मूव कर रहा है, ये V2 है, ये V1 है, तो व्हाट विल बी, प्रेशर इज कांस्टेंट है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन विल बी एरिया अंडर दिस ग्राफ. दिस विल बी द वर्क डन. नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट फॉर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा, सो सेम टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट फॉर temperature also, T initial or T final. Clear? So you will get the same type of graph for P versus T. Now coming to adiabatic process. We know that adiabatic process Q is equal to 0. Q is equal to 0. So if we use this equation, delta U is equal to Q plus W. Q is 0. So delta U will be equal to W. Means work done, this is known as work adiabatic. That means work will be done at the expense of the internal energy. See, when you are fasting, जब तुम्हारा fast है, you are not taking the food, that means you are not increasing your internal energy, but you are still doing the work. तो work कहाँ से कर रहे हो? तुम अपनी internal energy को use करके. Similar the case here with adiabatic process. When
there is no heat added to the system or no heat removed from the system, और work हो रहा है, work is done by the system. If work is done by the system, then it will be done at the expense of the internal energy. तो उसकी internal energy decrease होगी. internal energy decrease होने का मतलब है उसका temperature decrease होगा. It will produce cooling. Clear? इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इट विल प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड डेल्टा यू इज एन सी पी डेल्टा टी. ठीक है, दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी. नाउ can you relate this, can you write Cp as, see there are certain relation, Cp upon Cv is equal to gamma, clear, and Cp minus Cv is equal to R. So can we write, if we divide this by Cv, इसे पूरे को Cv से डिवाइड कर दें, Cv डिवाइडेड बाई Cv डिवाइडेड बाई Cv, तो ये क्या हो जाएगा, Cp बाई Cv विल बी इक्वल टू गामा. Cv अपॉन Cv इज 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv, और वी कैन राइट Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1. तो हम Cv की जगह रखेंगे NR गामा माइनस 1, डेल्टा T विल बी T2 माइनस T1. So this will be the expression for work done, work in adiabatic process. Now from the equation PV is equal to nRT, nRT2 can be written as, if you take it inside, nRT2 minus nRT1 upon gamma minus 1. Can you write nRT2 as P2V2? So it will be P2V2 minus P1V1. Clear? P2V2 minus P1V1, and this is 1 upon gamma minus 1. So either use this expression, you can use this expression for calculating the work done during adiabatic process. This is for reversible process. Clear? This is for reversible process. Or you can use this formula for work done during reversible adiabatic process. So both the formulas can be used. So we have derived the formula for work done for all the four process. Isochoric process work done will be 0. Isobaric process work done will be minus P V2 minus V1 or minus NR T2 minus T1. Adiabatic process, this is the formula, and isothermal process we have derived the two formulas. Now let us solve one questions based on it. Now this was a question asked in IIT JEE 2017 advanced. There are three columns given, column 1, 2 and 3, and you have to match all the three columns. Formula of work done is given, in the second process is given, in the third one graph is given. Now let us start with the first one. See, work done is equal to 1 upon gamma minus 1 P2 V2 minus P1 V1. ये अभी हमने derive किया कौन से process के लिए, adiabatic process के लिए. And what will be the graph for adiabatic process? Let's leave it now. We will discuss it afterwards. Second देखो, second है minus PV2 plus PV1. Can you write minus PV2 minus V1? And this will be the graph for isobaric process, constant pressure. ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड. कांस्टेंट प्रेशर के लिए ग्राफ कौन सा बनाया था? दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर, स्ट्रेट लाइन है प्रेशर के लिए, तो ग्राफ हो जाएगा P. क्लियर? थर्ड वन, थर्ड के लिए देखो वर्क डन इज 0. 0 इज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस सेकेंड, और ग्राफ कौन सा आएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये ग्राफ आएगा, तो ये हो जाएगा S. नाउ कमिंग टू फोर्थ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग. ये था फॉर्मूला जब हमने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस. लॉग E का मतलब है हम इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए. तो फोर्थ का है फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ ग्राफ फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों के लिए इस टाइप का ग्राफ आता है P वर्सेस B. बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये ग्राफ थोड़ा स्टीपर होगा, मीन्स इट विल बी मोर क्लोजर टू द एक्सेस. तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये एडियाबैटिक के लिए होगा, और ये जो ग्राफ होगा ये आइसोथर्मल के लिए होगा. एंड कैन यू टेल इन विच केस द वर्क डन विल बी मोर?
वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया किसके अंडर ज़्यादा आएगा, आइसोथर्मल के अंडर, ठीक है, ये एरिया आएगा आइसोथर्मल में और ये एरिया आएगा एडियाबैटिक में। सो वर्क इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबैटिक। सो व्हाट इज द ग्राफ, दीज टू आर लेफ्ट। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, जो ज़्यादा स्टीपर है वो एडियाबैटिक के लिए है। तो क्यू हो जाएगा एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए था फोर्थ, ये हो जाएगा क्यू, और फर्स्ट के लिए आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा दिस ग्राफ आर। सो दिस इज द column. In this way you can match the columns. So we have derived all the 4 formulas for the different process. One more question was asked, 4 lines were given, 1 2 3 4. These 4 lines are given for pressure versus volume. You have to identify the type of process here. Now can you identify? It is easier. First is pressure constant, isobaric process. Second one is, second ये था बेटा, second is volume constant, it is isochoric process. थर्ड एंड फोर्थ जो ज़्यादा स्टीप होगा वो कौन सा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फोर्थ इज एडियाबैटिक, थर्ड इज आइसोथर्मल. सो यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द ग्राफ. And work done will be equal to the area covered under pressure volume graph. So this is all about work done in different types of process. I hope you have understood the topic well. You like the video. If you like it, please do subscribe, share it. Thank you.